Hello there, welcome back you all in today's session. Hope you must be doing really great in life. So in today's session we are discussing class 11th chapter 2, that is theory base of accounting. So without any further delay, let's begin the session. Okay, so the first thing is generally accepted accounting principle, popularly known as GAAP, generally accepted accounting principles. So why there is such concept like generally accepted accounting principle? See, in business, there are alternative methods of recording business transactions. For example, there are cash basis and accrual basis of recording business transaction. And as per cash basis and as per cash accrual basis, the profit will be different. क्योंकि दो अलग अलग मेथड है. Okay, which create dilemma, confusion to the investors when he decide in which company he has to invest. He often gets confused. So in order to mitigate that problem, there are such concept like generally accepted accounting principles. Okay, the main purpose of generally accepted accounting principle is to maintain uniformity and consistency. Okay, then gap, or generally accepted accounting principles, refers to the rules और guidelines. रूल भी हो सकता है और गाइडलाइन भी हो सकता है, which are adopted for recording and reporting of business transactions. So rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and the presentation of financial statement, right? तो मेनली हम इधर यूनिफॉर्मिटी के ऊपर एंड कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं. ठीक है. देन देयर आर टू थिंग्स, concept and conventions, which are interchangeably used but have different meaning. So let us discuss concept first. So concept means assumptions and ideas. Okay, concept means assumptions and ideas which are fundamental to accounting practice, जो कि वेरी फंडामेंटल है. ओके, एंड कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशंस आर कस्टम्स और ट्रेडिशंस. ओके, a guide to the preparation of accounting statement. तो मतलब ट्रेडिशनली कुछ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जा रहा है अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, दैट इज कन्वेंशन. ओके, सो जनरली हम ये सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं? बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट बोल देते हैं. ओके, सो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन, देन मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, consistency, conservatism or prudence, materiality, objectivity. So let us discuss one by one in a very brief manner. Okay, so the first one is business entity concept. So what does this business entity concept means? So this concept assumes that business has a distinct and separate entity from its owner. So this concept says that business and businessmen are two different persons. Okay, then
The next concept is money measurement concept. This concept says that only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money are to be recorded in the books of accounts. So those transactions are happening which can be expressed in monetary term or monetary value are to be recorded, and those transactions are happening which cannot be uh, expressed in monetary terms shall not be recorded in books of accounts. So simple, right? So the next one is going concern concept. So going concern concept says that business firm would continue to carry out its operation indefinitely. Okay, सो हम तो ऐसे बिजनेस शुरू नहीं करते कि नहीं करते ना कि हाँ एक दिन में कि 5 दिन में बंद कर देंगे। जब तक प्रॉफिट आता जाता है, मतलब ऑन हो रहा है, तब तक वो बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, राइट? सो दिस concept, going concern concept, says that business firm would continue to carry out or operate its operation indefinitely, operate for a indefinite period of time. Okay. Then accounting period concept. So accounting period concept refers to the span of time at which, at the end of which the financial statement of an enterprise are prepared. See, mainly this is a span of 12 months. Okay. So starting from 1st April to 31st March. 1st April to 31st March. So the span of time at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। ओके, और भी कुछ चीज़ें आता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वी डोंट नीड टू स्टडी दिस। ओके, स्टडी दोज। सो द नेक्स्ट वन इज cost concept. So this concept requires that all assets are recorded in the books of accounts at their purchase price. ओके, मतलब परचेज करने में जो जितना भी पैसा लगा, एक एसेट को परचेज करने में जितना पैसा लगा, उस प्राइस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको एक्वायर करने में जो पैसा लगा या ट्रांसपोर्ट करने में जो पैसा लगेगा, और इंस्टॉलेशन के लिए जितना पैसा लगा, उस सब को भी हम ऐड करेंगे और उस बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। ओके, so let me read this again. All assets are recorded in the books of accounts at their purchase price, which includes cost of acquisition, transportation, installation, and making the asset ready to use. Okay. Then dual aspect concept. This concept says that every transaction has a dual or twofold effect and should therefore be recorded at two places. तो बोलता है कि एवरी ट्रांजेक्शन का टू इफेक्ट रहता है, और डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट। इन अदर वर्ड्स, एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन। बेयर मिनिमम एटलीस्ट टू अकाउंट आएगा रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? और यू कैन से फॉर एवरी डेबिट देर इज ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ओके, एवरी डेबिट के लिए एवरी क्रेडिट आएगा। और एक थिंग है जो कि फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन याद कर लेना, asset इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ए इज इक्वल टू ए फॉर asset इज इक्वल टू एल लाइबिलिटी प्लस सी कैपिटल। ओके,
Then revenue recognition or realization concept. So this concept says that revenue recognition require or revenue okay so revenue recognition requires that the revenue of a business transaction should be included in the accounting record only when it is realized. तो रेवेन्यू को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो रियलाइज होगा, ठीक है, जब पैसा एक्चुअली में मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे. ओके, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड. देन मैचिंग कॉन्सेप्ट. ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दिस concept states that expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue during that period. तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितना भी एक्सपेंसेस लगा वो सारे एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू से माइनस करेंगे, ठीक है. एंड जो एक्सपेंसेस है वो पर्टिकुलरली वही अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए जिससे हम रेवेन्यू से माइनस कर रहे हैं. ओके, सो सपोज 2025 का एक्सपेंसेस है तो 2025 का रेवेन्यू से ही माइनस करेंगे. ओके, then full disclosure concept. So this concept focuses on financial statement, and the financial statement should give full, fair and adequate disclosure of all the information, right? And after getting the information, one can take any financial decision. Okay, so क्या बोलता है ना, all material and relevant facts concerning the financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed. Okay, all the financial information, all the financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statement and their accompanying footnotes. ठीक है. Then consistency concept. Consistency concept क्या बोलता है? Accounting policies and practices followed by an enterprise are uniform, should be uniform and should be consistent over the period of time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इस साल कुछ मेथड फॉलो कर दिया और दूसरे साल और कुछ फॉलो करो, तो दिस विल क्रिएट डिलेमा, राइट? कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो इसलिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस should be followed by an enterprise and that must be uniform and consistent in nature. Okay, then conservatism concept, the most important one. Okay, also known as prudence. This is a policy of playing safe. Okay, so this concept says that profit should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है लॉस होने का, फिर भी ओके, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड. ओके, सो प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided in the books of accounts. So that's why it is called a policy of playing safe.
ओके, तो बोलता है कि प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं हो जाता तब तक रिकॉर्ड रिकॉर्ड मत करो, बट अगर लॉस मतलब लॉस का थोड़ा सा भी मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी भी आता है ना, तो उसको रिकॉर्ड कर दो। ओके, तो दिस इज नोन एज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस concept. Okay, the next one is materiality concept. Accounting should focus on material facts. So this concept says that accounting should focus on material facts. Effort should not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial in the indetermination of income. So we have to understand what is material and what is immaterial. This materiality concept says that only material things or material facts should be recorded or presented, and immaterial things must be kept away. Okay, so material facts are those facts which can influence the decision of an investor. Okay, so material means those information having the influence of decision. ओके, दो मतलब जो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन को. ओके, देन ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट मीन्स accounting transaction should be recorded in an objective manner, that is free from bias. Okay, objectivity means free from bias. So accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from the bias of accountants and other. Okay, bias नहीं होना चाहिए. So the next one, yes, we have completed all the concepts. Now there are some small things that are discussed one by one. The next one is system of accounting. See, system of recording or system of accounting can be classified into two types. First one is double entry system and the second one is single entry system. Double entry system is based on the principle of dual aspect. For every debit there is a credit, right? And this is the most appropriate method of recording business transaction in accounting. Double entry double entry system of accounting. Okay, the basic principle followed is that every debit must have a corresponding credit. Thus one account is debited. If one account is debited, then the other is credited. Okay, एंड जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है एंड बिजनेस में तो मतलब फॉलो ही नहीं होता है. ओके, एंड सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट ए कंप्लीट सिस्टम of maintaining records of financial transactions. Okay, then basis of accounting. Mainly there are two bases of accounting. First one is cash basis and accrual basis. See, cash basis मतलब क्या होता है? तो कैश बेसिस में हम जब कैश मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे. ओके, सपोज यू ऑन सम मनी, ओके, ऑन सम इनकम, राइट. सो जब कैश मिलेगा तभी रिकॉर्ड करोगे. सपोज ड्यू हो गया तो अमाउंट अभी पैसा नहीं मिला है तो रिकॉर्ड नहीं करोगे. जब कैश मिलेगा तभी रिकॉर्ड करोगे. दैट इज कैश बेसिस. एंड एक्रुअल बेसिस बोलता है कि जब मतलब इनकम हो गया, ड्यू हो गया, तभी रिकॉर्ड करो. बाद में कैश मिलेगा तभी भी चलेगा. लेकिन कैश बेसिस फोकसेस ओनली कैश.
So let us read this. Under the cash basis, entries in the books of accounts are made when cash is received or paid, and not when the receipt or payment becomes due. Okay, hope I am clear. Then under the accrual basis, however, revenue and cost are recognized in the period in which they occur rather when they are paid. ओके, पैसा कब पे मतलब पेमेंट किया और रिसीव किया, दैट डजेंट मैटर. जब ड्यू हो गया, इनकम ऑन हो गया, तभी हम रिकॉर्ड कर देंगे. एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट. टू शो द एक्चुअल प्रॉफिट, accrual basis is followed. तो दिस इज ए मोर अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. तो एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में कौन सा मेथड ज़्यादा सही है? accrual basis. Then accounting standards. So these are written policy documents covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation, disclosure of accounting transactions in the financial statements. So क्या है ये सब? So कुछ मतलब क्या है, पॉलिसी है. ओके, जो कैसे ट्रीट करता है, क्या मतलब क्या क्या एस्पेक्ट के साथ डील करता है. तो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये सारे चीज़ों के साथ डील करता है. ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, presentation, disclosure of accounting transaction in the financial statement. And these accounting standards are issued by ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India. Okay, and the main objective of accounting standard is to bring uniformity. Okay, so as I said earlier, there are multiple alternative methods of recording business transactions, so that creates confusion. ओके, तो वो सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया गया है. ओके, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. देन द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. तो फर्स्ट तो यूनिफॉर्मिटी लेके आता है. दे कैन, ओके, सो देर आर ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सो अलग अलग रिजल्ट, मतलब रिजल्ट क्या अलग अलग होगा. तो एक मेथड फॉलो करोगे तो सारे रिजल्ट तुम मतलब इजीली कंपेयर कर पाओगे ना, सो दैट यू कैन टेक डिसीजन वेरी इजीली और मोर अप्रोप्रिएटली. सो द मेन ऑब्जेक्टिव of accounting standard is to bring uniformity. Okay, then benefits of accounting standards. क्या क्या benefits है? Helps in eliminating variations. So जो variations है ना, variation को eliminate करता है. Suppose there are two organization, one is following cash basis and another is following accrual basis. So दोनों का जो रिजल्ट्स है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, सो अलग अलग आएगा, मतलब डिफरेंसेस आएगा ना. सो उसको क्या करता है, एलिमिनेट करने में मदद करता है. ओके, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर्स ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ. लॉ का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकता है कि नहीं, हाँ ये सब डिस्क्लोज कर सको, करो, ठीक है. बट सच इंफॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स. देन फैसिलिटेट करता है कंपेरेबिलिटी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी. तो डेविएशन जो है ना, जो वेरिएशन है उसको एलिमिनेट करता है एंड कंपेयर करने में मदद करता है.
ओके, देन लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। ओके, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है टू अप्लाई। देन रिजिडिटी हो, मतलब रिजिड होता है, फिक्स्ड बोल सकते हैं, रिजिड, रिजिडली फॉलोड, एंड फेज टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है इधर। ओके, जिसे बताया गया है उससे ही फॉलो करो। देन कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, मतलब कोई लॉ में लिखा गया है कि नहीं ऐसा ही करना है, सो एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि नहीं ऐसा करो, तो ऐसे नहीं कर सकते। जितना मतलब लॉ में लिखा गया है उतना ही करना, तो दिस कैन नॉट ओवरराइड द लॉ। देन कुछ जीएसटी के बारे में है, देखते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, popularly known as one country one tax. So this is a destination based tax on consumption. So मतलब destination based tax on consumption means जो स्टेट कंज्यूम करेगा, जिस मतलब स्टेट में कंजम्पशन होगा वो वाला स्टेट ही टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करता है ना, तो वो स्टेट को ही उसका सेग्रीगेशन मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, जो शेयर ऑफ टैक्स मिलेगा। ओके, तो डेस्टिनेशन जिधर कंजम्पशन उधर से टैक्स कलेक्ट होगा, एंड वो वाला स्टेट को ही टैक्स का जो शेयर है मिलेगा। ओके, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन। सो मेनली देर आर थ्री component of GST. The first one is IGST, integrated goods and services tax. Then SGST, state goods and services tax. CGST, central goods and services tax, right? Then so the taxes है ना, mainly taxes can be classified into two types. First one is direct tax and the other is indirect tax. डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इनकम टैक्स। जैसे तुम इनकम करोगे उसके हिसाब से तुम्हें टैक्स देना है, ठीक है। एंड देयर इज इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक इनडायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जीएसटी जीएसटी इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो जीएसटी से पहले हमारे कंट्री में कुछ टैक्सेस हुआ करता था, ठीक है। सेंटर के लिए कुछ टैक्सेस था एंड स्टेट के लिए कुछ टैक्सेस था। सेंटर के लिए जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, कस्टम। हालांकि एक्साइज ड्यूटी अभी भी कुछ स्पेसिफिक गुड्स के लिए है, एंड कस्टम तो है ही अभी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों का क्या मतलब रिप्लेस हो गया जीएसटी से, अपार्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम। तो एज आई सेड, एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगता है कुछ स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर, एंड कस्टम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर लगता है कस्टम ड्यूटी। ओके, एंड स्टेट का जो था वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोई, लग्जरी टैक्स, ये सब खत्म हो गया है जीएसटी के आने के बाद। ओके, देन characteristics of goods and services tax. So GST is a common law, okay, and procedure, common law and procedure throughout the country. ऐसा नहीं कि मतलब महाराष्ट्र में लगता है और गोवा में नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं। तो दिस इज ए कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री, राइट। देन जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सो
डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिधर कंजम्पशन होगा, जिधर वो गुड्स जाएगा फाइनली कंजम्पशन होगा, उधर से टैक्स कलेक्ट करेंगे। ओके, देन कॉम्प्रहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन। कॉम्प्रहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन का मतलब, सपोज देयर इज ए सेलर, राइट, बट बिफोर ही सेल ही हैज टू बाय, राइट। सो जब वो बाय करेगा वो भी तो टैक्स देगा, जीएसटी देगा, ठीक है। सपोज वो 10 रुपीज का जीएसटी दिया, ओके, एंड जब वो सेल करेगा कस्टमर को, सब सपोज 25 कलेक्ट करेगा आज जीएसटी। नाउ द क्वेश्चन arises, how much net he has to pay to government? So ऑलरेडी 10 रुपीज पेमेंट कर दिया एंड कस्टमर से अभी 25 कलेक्ट किया, तो नेट में उसको 15 रुपीज देना पड़ेगा। 25 माइनस 10, ओके, 25 माइनस 10, 15 रुपीज। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन, राइट। मतलब जो क्रेडिट, मतलब जो पहले पेमेंट कर दिया था 10 रुपीज, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, छूट, मतलब छूट मिल जाएगा। ओके, देन नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स, जो अभी देखे थे, सर्विस टैक्स, ओके, वैट, बहुत सारा टैक्सेस हुआ करता था एंड जीएसटी रिप्लेस्ड ऑल दोज टैक्सेस। तो नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्सेस। देन एडवांटेजेस क्या क्या है जीएसटी का? abolition of multiple types of taxes, then widen the tax base and increase revenue to center and state। तो जो टैक्स बेस है ना, तो बहुत वाइड हो गया, वाइडन कर दिया, तो बहुत सारा रेवेन्यू सेंटर के पास, स्टेट के पास आया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ही कम हो गया एंड रिड्यूस्ड कॉम्प्लायंस कॉस्ट। तो पहले जो मल्टीपल टैक्सेस हुआ करता था उसके लिए बहुत सारा कॉम्प्लायंसेस कॉस्ट लगता था। अभी जीएसटी मतलब क्या हो गया, एक ही हो गया ना, एक ही टैक्स हो गया, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लायंस कॉस्ट भी बहुत कम आएगा एंड रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट। तो पहले क्या हुआ था जीएसटी से पहले, तो टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट हुआ करता था, ठीक है, तो वो भी रिमूव हो गया। ओके, टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट, वो भी रिमूव हो गया, ठीक है। देन प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब पहले जो बार बार टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, वो वाला कंसेप्ट था, वो वाला ख़त्म हो गया। तो अभी जो बायर के पास मतलब कम पैसा में चीज़ें अवेलेबल हो सकता है। ओके, तो प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, then helps to extend competitive edge in international market leading to increased export। तो हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव एज इन इंटरनेशनल मार्केट एंड लीडिंग टू इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट। देन जीएसटी का टाइप्स देखते हैं थोड़ा। जीएसटी कैन बी ऑफ टू टाइप, आई मीन थ्री टाइप। ओके, सो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंट्रास्टेट में है, इंट्रास्टेट मीन्स विद इन द स्टेट। ओके, सपोज महाराष्ट्र ले लेते हैं, महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र, then that is called intrastate movement। Intrastate movement means from one state to another, okay, from Maharashtra to Odisha और उड़ीसा से महाराष्ट्र, और कोई भी मतलब स्टेट हो सकता है। तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंट्रास्टेट में हो रहा है, दैट मीन्स विद इन द स्टेट, देन देर इज टू टैक्सेस, दैट इज CGST and SGST। CGST is levied by center and SGST is levied by state। Okay,
And intrastate, that means from one state to another state movement हो रहा है goods or services, then IGST will be collected or levied. So GST levied by the center and state concurrently or jointly, right? So uh, we have completed the chapter in a very brief manner. Hopes you get a benefit from this video. So thank you for being such an wonderful audience. Thank you so much.